The convention of Sahitya Akademi. The Vice President Sahitya Akademi will welcome the award winner with a bouquet, and the President Sahitya Akademi will present the plaque and also the cash prize of rupees 1 lakh and shawl. So the award in Assamese goes to Samir Tantiji. Samir Tanti is an eminent Assamese poet and writer. He was born on 6 February 1955 in Assam. He holds a master's degree in English literature from Guwahati University. Besides Assamese, he knows English. He started his career in 1983 as sub-editor in Sadiniya Nagarik. He worked with the government of Assam's Department of Tourism from 1984 to 2016. He has 15 collections of poems, 4 books of critical and literary essays, 2 translated collections of Assamese, of Japanese and African poems, and 2 edited short story collections to his credit. He is a recipient of Assam Valley Literary Award, Shabda Bhota, Changan Lal Award, and Padmanabha Vidya Vinod Literary Award, among others. Paring Bore Bator Katha Jane is a collection of 42 Assamese poems. These poems vividly portray the Northeast India of the post-colonial age with its rich natural beauty, political ups and downs, diverse cultures, high levels of spiritual life, and enviable simplicity. The poems are remarkable for the poet's rare awareness of the time, his thought provoking focus on death and spirituality, besides deep environmental concern, as they speak of rapid destruction of nature due to aggressive spread of capitalism and the dangers that the contemporary world is facing. The poet dexterously encapsulates many a theme while maintaining impressive simplicity of language. As such, Paringbo Batur Katha Jane is considered as an important contribution to the genre of Indian poetry in Assamese language. Thank you. Award in Bodo goes to Arun Raja, alias Akan Basmutari. Arun Raja, alias Akan Basumtari, is an eminent Bodo writer. He was born on 6 June 1968 at Chatianguri, Bijni, Assam. Besides Bodo, he knows Assamese, English, and Hindi. He has his career in private school management. He has 14 novels and 4 collections of short stories to his credit. He is a recipient of Sameswari Brahma Literary Award and Asha Mushahari Literary Award. Sorni Thake is a Bodo novel that depicts woes and travels of Bodo families. The novel thoughtfully addresses issues of human existence and breakdown of family relations and stands out for its characterization, narrative technique, and deep sensitivity and profound understanding of human existence. The author effectively conveys the suffering and inner turmoil of the protagonist Mohiram, which evokes sympathy
and human warmth. The novel also speaks of contemporary economic issues with acute social concern and is written in a highly relatable language. As such, Sorni Thakai is considered as an important contribution to the genre of Indian fiction in Bodo. Thank you. The award in Dogri goes to late Chaman Arora. That award will be received by his daughter, Molashri Arora. Please have a seat. No, doesn't matter. Please have a seat. Please. Chaman Arora was an eminent Dogri writer and playwright. He was born on 19 February 1945 in Jammu and breathed his last on 28 August 2024. He was the retired district officer, Agriculture Department of Jammu and Kashmir. Began writing in 1973. He produced the Dogri telefilm Jeene Di Gaid, and he translated several books, including Krishna Chandler the Chuninda Kahaniya. Many of his short stories have been translated into English, Hindi, Punjabi, Manipuri, Konkani, Rajasthani, and Kashmiri. He regularly contributed to the All India Radio and Doordarshan. He was a recipient of the Best Book Award by J&K Academy of Art, Culture, and Languages. Ik Hor Aswathama is a collection of 15 Dogri short stories. The stories encapsulate many a theme like human relationship, dire necessity to improve social ethics, etc. Steadfastly upholding the human values, the author magnificently portrayed the entangled lives of common people in close knit communities bound by shared beliefs, social norms, and practices. The narrative technique the author enjoyed is strikingly experimental. The short stories also portray flaws and strengths of contemporary society with rare sensibility and profound understanding of human life, maintaining excellence of the experimental style. The short stories are outstanding also for super characterization, racy plots, and clarity of expression. As such, Ikhor Aswathama is considered as an important contribution to the Indian short fiction in Dogri. Thank you. The award in English goes to Eastern Kair, but she is under medication. She sent a representative to receive on her behalf. Sayantan Ghosh will receive the award on behalf of Eastern Kair. Eastern Kair is an eminent English writer and poet. She was born on 29th March 1959 in Kohima, Nagaland. She has a doctorate degree in English literature from the University of Pune. Besides English, she knows Hindi, Norwegian, and Tinidi uh, languages. She is a publisher also and delivers talks on writing, literature, history, and culture. She has 44 publications to her credit, including translations from German and Norwegian. She is a recipient of awards and honors such as Freeword, the Hindu Lit for Life, Tata Book of the Year, Sahitya Akademi Bal Sahitya Puruskar, Publishing Next Best Book, and Fiki Book of the Year. Spirit Nights is a fictional account of Naga legends and society. Issues of gender and patriarchy are subtly addressed. The pellucid depiction of Naga society is such that the region becomes familiar to all readers.
The style has a simplicity, a deceptive simplicity that comes only from a sophisticated storyteller. Not only is the narrative crisp and the characterization of complex, the deep emotional resonance, the novel makes a culture that not many may know intimately, legible, and accessible. In these days of strife and division, the novel's powerful call for inclusivity and tolerance is one that should be acknowledged. As such, Spirit Nights is considered as an important contribution to the genre of Indian fiction in English. Thank you. The award in Gujarati goes to Dilip Jhaveri. Dilip Jhaveri is an eminent Gujarati poet, writer, and critic. He was born on 3rd April 1943 in Mumbai. He holds an MBBS degree. Besides Gujarati, he knows Hindi, Marathi, English, and partly Sanskrit, Sindhi, and Bengali. He has seven publications to his credit in Gujarati and seven publications in English and other languages. His poems have been translated into many foreign and Indian languages. He is a recipient of James Patak Prize, Gujarati Sahitya Parishad Award, Gujarat State Sahitya Akademi Award, Jeevan Gaurav Award of the State of Maharashtra, and Karunanidhi Award. Bhagwanni Vato is a collection of 16 prose poems, but thematically it is a single long poem. It creates a complex collage about God, a serious central theme treated in light and conversational language. It is extraordinarily creative in terms of vibrant imagination, vernacular tones of expressions, and metaphors crafted from a multitude of multi-hued images. Under the gauze of tales, the poet endeavors to encompass the entire universe, which creates a complex poetic experience of God and overwhelms human existence with innumerable beliefs, images, and imagination about Him. The poem also stitches together fragments of politics, science, history, blending past and present to quilt a unique narrative. As such, Bhagavanni Vato is considered as an important contribution to the genre of Indian poetry in Gujarati. Thank you. हिंदी में पुरस्कृत गगन गिल. गगन गिल प्रख्यात हिंदी कवयित्री, लेखिका तथा अनुवादिका है. आपका जन्म 18 नवंबर 1959 को हुआ. आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए की उपाधि प्राप्त की. आपको हिंदी के अलावा अंग्रेजी तथा पंजाबी भाषाओं का भी ज्ञान है. आपने टाइम्स ऑफ इंडिया समूह तथा संडे ऑब्जर्वर में एक दशक से अधिक समय तक साहित्यिक संपादक के रूप में कार्य किया है. आपकी 10 कृतियां प्रकाशित है. आपकी कुछ रचनाओं का अंग्रेजी तथा जर्मन भाषाओं में अनुवाद हुआ है. आपको संस्कृति सम्मान, केदार सम्मान, अमर उजाला शब्द सम्मान, दिग्वि द्विजदेव सम्मान, दिल्ली हिंदी अकादमी साहित्यकार सम्मान से विभूषित किया जा चुका है. आप आयोवा इंटरनेशनल राइटर्स प्रोग्राम में राइटर इन रेसिडेंसी रह चुकी है. मैं जब तक आई बाहर हिंदी का उत्कृष्ट कविता संग्रह है. कविताओं का आंतरिक स्वर मुख्य रूप से आध्यात्मिक
आध्यात्मिक है। कविताएं आध्यात्मिकता और आधुनिकता का दुर्लभ संयोजन प्रस्तुत करती है। इन कविताओं की विशिष्टता इस तथ्य में निहित है कि वे एक ऐसी भाषा की खोज करती है जिसमें सतह पर दिखाई देने वाला हल्का कंपन समस्त तनावों और दबावों को अपने भीतर समेट हुए हैं, जैसे बांध पर एकत्रित पानी। यह भी कहा जा सकता है कि ये कविताएं प्रार्थना के एक नए रूप में प्रतिरोध की कविताएं हैं। हर उस शक्ति के विरुद्ध प्रतिरोध जो न केवल मानवता पर बल्कि नारीत्व पर भी हमला करती है। इन कविताओं को काव्य भाषा में तीक्ष्णता लौटाने का प्रयास कहा जा चुका है। मैं जब तक आई बाहर कृति हिंदी में लिखित भारतीय काव्य को महत्वपूर्ण योगदान मानी गई है। धन्यवाद। The award in Kannada goes to K.V. Narayana, but he is not well, so he couldn't able to make it. Award in Kashmiri goes to Sohan Kaul. Sohan Kaul is an eminent Kashmiri writer and playwright. He was born on 17 June 1955 in Parnewa, Kashmir. He holds a doctorate degree in Urdu. Besides Kashmiri, he knows English, Hindi, Persian, and Urdu. He worked as a programmer in Doordarshan from 1981 to 2015. He has 16 novels and 15 plays to his credit. He is a recipient of Sangeet Natak Academy Award, Firak Memorial Award, and Bakshi Memorial Award, among others. Psychiatric Ward is a significant Kashmiri novel. It describes the entire socio-political milieu of Kashmir and is a saga of miseries and helplessness, using the metaphor of sickness powerfully. It reveals the problems of an ailing society. The development of a genuine sequence of events in a simple language with dialogues in colloquial idiom arguments augments the significance of the novel. The author imaginatively uses factual information in the novel and offers an exceptional narrative and suggests that the human race should create such a world where ease and gratification become the way of life. As such, psychiatric ward is considered as an important contribution to the genre of Indian fiction in Kashmiri. Thank you. The award in Konkani goes to Mukesh Thali. Mukesh Thali is an eminent Konkani writer, playwright, critic, and translator. He was born on 5th June 1963 at Mardol, Goa. He holds a bachelor's degree in science. He knows Hindi, English, and Marathi besides Konkani. He retired as newsreader in 2023 from All India Radio. He has 6 books to his credit and is a recipient of Goa Kala Academy Award, Goa Konkani Academy Award, Kala Academy Award, and Lokmat Writer of the Year Award. Rangatarang is a collection of 24 Konkani essays. The collection deals with a wide range of subjects. The essays are written in highly poetic and beautiful language, and their seamless, lucid flow is fascinating. The marvelous use of unusual idioms, phrases, and references leaves the reader awestruck. The depth of the message of these thoughtful, reflective essays is stunning. The essays take the reader to the
roots of the richness of Konkani language and transport them to the beauty of nature, music, and culture. As such, Rang Tarang is considered as an important contribution to the genre of Indian non-fiction in Konkani. Thank you. मैथिली में पुरस्कृत महेंद्र मलंगिया. महेंद्र झा उर्फ महेंद्र मलंगिया प्रख्यात मैथिली नाटककार तथा शोधकर्ता है. आपका जन्म 20 जनवरी 1946 को बिहार के मधुबनी के मलंगिया में हुआ. आपने बीए ऑनर्स तथा बीएड की उपाधियां प्राप्त की. आपने 5 दशकों तक भारत और नेपाल में नाटकों का निर्देशन किया है. आपको मैथिली के अलावा हिंदी, अंग्रेजी तथा नेपाली भाषाओं का भी ज्ञान है. आपके 12 पूर्ण नाटक तथा 24 एकांकी, 5 शोध कार्य, 5 कहानी संग्रह प्रकाशित है तथा आपने 5 पुस्तकों का संपादन भी किया है. आपको कलिंग साहित्य महोत्सव पुरस्कार, पुस्तक पुरस्कार, अक्षर सम्मान, हरिप्रसाद कल्याणी नाट्य संगीत पुरस्कार नेपाल, लून कर्णदास पुरस्कार नेपाल, नेपाल सरकार का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, विद्यापति पुरस्कार नेपाल, प्रबोधन साहित्य सम्मान सहित कई अन्य पुरस्कारों से विभूषित किया जा चुका है. प्रबंध संग्रह 19 मैथिली निबंधों का संग्रह है. ये निबंध वास्तव में खोजपूर्ण प्रकृति के है तथा भाषा और साहित्य के विकास के नए द्वार खोलते हैं. कीर्तनों के प्रकार, लोक कथाओं का उदय, सलहेस लोक नाटक का मंचन, भारत और नेपाल में नाटक चडमल का मूल्यांकन, सामाजिक सुधार में नाटक की भूमिका जैसे विषयों की विस्तृत विविधता को बनाए रखते हुए लेखक लोक संस्कृति की समृद्धि तथा उसकी समकालीन प्रासंगिकता को प्रस्तुत करता है. यह कृति न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी विशेष रूप से पठनीय है. प्रबंध संग्रह कृति मैथिली में लिखित भारतीय निबंध साहित्य को महत्वपूर्ण योगदान मानी गई है. धन्यवाद. Award in Malayalam goes to K. Jayakumar. K. Jayakumar is an eminent Malayalam poet, writer, and scholar. He was born on 6th October 1952 in Thiruvananthapuram, Kerala. He holds master's degrees in English literature and in development studies. He knows English, Hindi, and Tamil besides Malayalam. He is a former IAS officer who retired as Kerala Chief Secretary and is the founding Vice Chancellor of Malayalam University, Tirur. He has 47 books to his credit, 40 in Malayalam and 7 in English. He is a recipient of Kerala Sahitya Akademi Award, Kerala Sangeet Natak Akademi Award, Asan Prize, Pandalam Kerala Varma Award, Krishna Geeti Puraskaram, Jnanappana Puraskaram, Ettumanuru Somanathan Award, and many others. Pingala Keshni is a collection of 40 Malayalam poems. The poems are exceptional with a plethora of original images, subtle nuances of expressions, with a flowing diction that make them truly ingenious. The poet is on a journey of self search
with the background of shattering preconceived social notions in the contemporary world, while touching the subjects like childhood, womanhood, politics, environmental crisis. The collection of poems can be termed as the poet's representative collection of poems, where his imagery, emotional crisis, existential concerns, and his characteristic irony find eloquent expression. As such, Pingalakeshni is considered as an important contribution to the genre of Indian poetry in Malayalam. Thank you. Award in Manipuri goes to Haobam Satyapati. Haobam Satyapati is an eminent Manipuri writer. She was born on 1st February 1954 in Imphal, Manipur. She holds a bachelor's degree in education and master's degree in arts. Besides Manipuri, she knows English and Hindi. She has 8 publications to her credit. She is a recipient of Kaidam Pramodini Gold Medal, Dineshwari Sahitya Award, Rajkumar Shitaljit Memorial Lifetime Achievement Award, and Public Library Poetry Award. Mainu Bada Nungshi Shirol is a long poem written in a prayer chant form based on a tragic love story from the 18th century Manipur. The setting of the story is spread over the geographical area from Manipur to Assam and Tripura. The poem stands tall for its marvelous and gripping diction, composition, and narrative style. Besides, the poet's use of similes, metaphors, and proverbs in the depiction of incidents is remarkable. The poet has successfully portrayed social realism practices, folk elements of the era, while being careful not to mar the contemporary relevance of the characters with any undue exaggeration, and succeeds in embodying them with contemporary social and cultural relevance. As such, Meinu Bora Nungshi Shirol is considered as an important contribution to the genre of Indian poetry in Manipuri. Thank you. Award in Marathi goes to Sudhir Rasal. Sudhir Rasal is an eminent Marathi critic and writer. He was born on 10th August 1934 in Aurangabad, Maharashtra. He holds master's and doctorate degrees. Besides Marathi, he knows Hindi and English. He retired as a professor of Marathi from Dr. Baba Sahib Ambedkar Marathwada University, Aurangabad. He has 6 books to his credit. He is a recipient of Jeevan Sadhana Puraskar by Baba Sahib Ambedkar Marathwada University, Ashok Kelkar Puraskar by Maharashtra Government, Jeevan Vritti Puraskar by Sahitya Sanskriti Mandalam, Jeevan Gaurav Puraskar by Marathwada Sahitya Sammelan, and many others. Vindache Gaddiru is a significant work of metacriticism and discussion in detail critical writings of Vinda Karindikar, Jnanpith Award-winning distinguished Marathi poet and critic. The author simultaneously dismantles the recognizes Karandikar's literary criticism. His critique of Professor Karandikar's poetics
thoroughly explains Karandikar's theoretical position and establishes that Karandikar has explored a new theory named literature, a vital art, and also that literature is entirely different than the fine arts and it offers new vision of life while other arts offer a feeling of form. It firmly comes up with the new vision that literature cannot be a part of the fine arts. As such, Vindache Gadyaru is considered as an important contribution to the genre of criticism in Marathi. एक आदमी पर खड़ा हो जाइए बगल में। बैठ खड़ा हो जाइए। Award in Nepali goes to Yo Baral Anant. Yuva Baral Anant is an eminent Nepali writer. He was born on 6 April 1973 in Biring, Pokyang, Sikkim. He holds a bachelor's degree. Besides Nepali language, he knows Hindi and English. He works with the Sikkim government power department. He has published one collection of poems and three short story collections. He is a recipient of Shasta Puraskar, Rachana Katha Puraskar, समय कथा पुरस्कार डॉक्टर शोभकांति तीगिम लेप्चा स्मृति पुरस्कार तुलसी कश्यप स्मृति पुरस्कार लालमन संचारिणी पुरस्कार काव्य रत्न श्री पुरस्कार and Vishwa Shanti Kavya Setu, among others. Chichimira is a collection of Nepali short stories. Urbanization. The tableau of Nepali culture is marvelously depicted in the short stories. The author's insistence on the new generations to become aware of traditional and cultural heritage is rare and genuine. The short stories are also singular in the art of characterization and narrative technique. As such, Chichimira is considered as an important contribution to the genre of Indian fiction in Nepali. Thank you. The award in Odia goes to Vaishnav Charan Samal. Vaishnav Charan Samal is an eminent Odia writer. He was born on 27 February 1939 in Kendrapara, Odisha. He holds a D.Litt degree. Besides Odia, he knows English, Sanskrit, Hindi, and Bengali. He was head PG Department of Odia, Utkal University, and also of PG Department of Odia, Vishwabharati Shantiniketan. He was a member of Odisha Sahitya Akademi for two terms. He has published more than 160 books in different genres like criticism, poetry, short story, Ramya Rachna, and essays, children literature, monographs, etc. He is a recipient of Kadambani Sahitya Samman, Nikila Utkal Bagmi Samman and Puraskar, Pandit Godavari Mishra Samman, Hare Krishna Mehtab Samman, Fakir Mohan Samman,
मायाधर मानसिंह सम्मान, श्रवणी साहित्य सम्मान, जगमोहन लाल सम्मान, गान कवि वैष्णव पानी सम्मान, and Kabibara Radhanath Ray Samman, among others. Bhuti Bhakti Vibhuti is a collection of 32 literary essays on transcendental Indian philosophy and the Bhakti tradition. The author has penned greatly enriching essays with spiritual musings, focusing on the qualities like empathy, compassion, and renunciation. The author is committed to the continuing quest of life with absolute sincerity and dedication. He has particularly emphasized on the tradition and transformative values in Indian literature. Through its profound reflections, the book also emphasizes on divine bliss, devotion, and grace. As such, Bhuti Bhakti Vibhuti is considered as an important contribution to the genre of Indian non-fiction in Odia. Thank you. Award in Punjabi goes to Paul Kaur. Paul Kaur is an eminent Punjabi poet. She was born on 15th May 1956 in Patiala, Punjab. She holds master's and doctorate degrees in Punjabi. She retired as associate professor from S.A. Jain College, Ambala. Besides Punjabi, she knows Hindi and English. She has 10 poetry collections, 2 works of non-fiction, 1 book of criticism to her credit. She has also edited 3 poetry collections. 4 books have also been brought out on her verse and life. She is a recipient of Rag Puraskar, Twarik Ratan Award, Parminder Jeet Yadgiri Samman, Tara Singh Yadgiri Samman, Bhati Santhok Singh Samman, Baba Farid Samman, and Lopamudra Samman, among others. Sun Gunvanta, Sun Buddhivanta, Itihas Nama is a collection of poems about the history of the region of Punjab. The poet begins it with the advent of civilization in the region and thoughtfully journeys through history, eventually holds dialogues with Maharaja Ranjit Singh and Maharaja Dalip Singh. The poems make sincere attempt to understand the ancient treatises, various ideologies, how these ideologies influence people. The poems, their sensitivity and thought depict the struggle of the natives of Punjab against the invaders and their rise from ashes. The poet has named the long poems after mystical and ideological symbols, with artistically fabricating the poems in the meters and metaphors prevalent during the era. As such, Sun Gunvanta Sun Buddhivanta Itihas Nama Punjab is considered as an important contribution to the genre of Indian poetry in Punjabi. थैंक यू राजस्थानी में पुरस्कृत मुकुट मणिराज मुकुट मणिराज प्रख्यात राजस्थानी कवि और लेखक है। आपका जन्म 30 दिसंबर 1955 को कोटा राजस्थान में हुआ। आपने एमए तथा बीएड की उपाधियां प्राप्त की। आपने राजस्थान सरकार में शिक्षक के रूप में कार्य किया तथा आप प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुए। आपको राजस्थानी के अलावा हिंदी भाषा का भी ज्ञान है।
आपकी राजस्थानी और हिंदी में 12 कृतियां प्रकाशित है। आप कविता, गजल, गीत तथा मुक्त छंद लिखते हैं। आपको राजस्थानी भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी के आगवान पुरस्कार, घनश्याम दास शराफ स्मृति राजस्थानी पद्य पुरस्कार, कवि लक्ष्मी नारायण मालव स्मृति पुरस्कार, राजस्थानी काव्य रत्न सम्मान तथा कई अन्य सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। गांव और अम्मा राजस्थानी में मुक्त छंद में लिखित 50 कविताओं का संग्रह है। कवि ने घटते मानवीय मूल्यों पर चिंता व्यक्त करते हुए परंपरा पर आधुनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। कविताएं गहरी संवेदनशीलता तथा दुर्लभ विश्व दृष्टि के साथ उस विशेष पीढ़ी को प्रस्तुत करती है जो ना तो अपने ग्रामीण परिवेश को घोड़ कर सकती है और ना ही शहरी जीवन को स्वीकार कर सकती है। कवि ने माता पिता और उनके बच्चों के जटिल मनोविज्ञान को सफलतापूर्वक दर्शाया है। कविताएं लोक संस्कृति, सामाजिक बुराइयों तथा मानवीय संघर्ष के महत्व को भी उजागर करती है तथा मानवीय गर्मजोशी की निरंतर वकालत करती है। कविताओं की भाषा भावनाओं तथा नवीनता से परिपूर्ण है। गांव और अम्मा कृति राजस्थानी में लिखित भारतीय काव्य को महत्वपूर्ण योगदान मानी गई है। धन्यवाद। संस्कृत में पुरस्कृत दीपक कुमार शर्मा। दीपक कुमार शर्मा प्रख्यात संस्कृत लेखक, कवि तथा अनुवादक है। आपका जन्म 1 जनवरी 1961 को नलबाड़ी, असम में हुआ। आपने एमए तथा पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की। आपको संस्कृत के अलावा असमिया, अंग्रेजी, बांग्ला तथा हिंदी भाषाओं का भी ज्ञान है। आप कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत और प्राचीन अध्ययन विश्वविद्यालय नलबाड़ी, असम के संस्थापक कुलपति है। आपकी 15 कृतियां प्रकाशित है। आपने भास्करयम, नरकासुर नरकासुरम का संस्कृत में तथा विवेक चूड़ामणि, कौवा, भर्तृहरि शतक शतक त्राय का असमिया में अनुवाद किया है। आपको साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, शिक्षा रत्न पुरस्कार, संस्कृत सेवा सम्मान, डॉक्टर वी राघवन पुरस्कार तथा काठिया दास स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। भास्कर चरितम एक सुंदर कविता है जो सामान्य रूप से असम तथा विशेष रूप से राजा कुमार भास्कर वर्मा के प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक इतिहास का वर्णन करती है। राजा भौम राजवंश के थे तथा 7वीं शताब्दी ईस्वी में शासन करते थे। वे वैदिक परंपरा के संरक्षक थे। फल फलस्वरूप संस्कृत को एक भाषा के रूप में उनके दिनों में अधिक महत्व मिला। यह असम के इतिहास पर प्रामाणिक, विश्वसनीय तथा सुंदर कविता है। विषय वस्तु असम के शिलालेखों से मेल खाती है। कविता सरल और स्वाभाविक रूप से सुंदर शैली में तथा एक ही छंद में रची गई है। कवि ने कुशलता पूर्वक तथा दुर्लभ प्रतिभा के साथ राजा की वंशावली को दर्शाते हुए उसके शासनकाल का काव्यात्मक सौंदर्य के साथ चित्रण प्रस्तुत किया है। भास्कर चरितम कृति संस्कृत में लिखित भारतीय काव्य को महत्वपूर्ण योगदान मानी गई है। धन्यवाद। संताली में पुरस्कृत महेश्वर सोरेन।
महेश्वर सोरेन प्रख्यात संथाली लेखक और नाटककार है। आपका जन्म 18 जनवरी 1980 को मयूरभंज बैठिए जरा। आपका जन्म 18 जनवरी 1980 को मयूरभंज उड़ीसा में हुआ। आपको संताली के अलावा उड़िया, हिंदी तथा अंग्रेजी भाषाओं का भी ज्ञान है। आपकी 4 कृतियां प्रकाशित है। आपने 2 संताली फिल्मों दुलाल माया तथा धर्म दरबार की पटकथाएं लिखी है। आपको वाग्मी विश्वात्कर साहित्य सम्मान, उत्कल सम्मिलानी के नाट्य सारथी पुरस्कार, विशेष विकास परिषद मयूरभंज से वर्ष 2019 के सर्वश्रेष्ठ लेखक श्याम सुंदर हेम्ब्रम पुरस्कार, पंडित रघुनाथ मुर्मू पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से विभूषित किया जा चुका है। सोचेत सावतारण आंध्र मानवी संथाली में उत्कृष्ट पूर्ण दीर्घ नाटक है। यह कृति संताल समाज में शिक्षित लोगों पर वैश्वीकरण के नाटक नकारात्मक प्रभाव की एक सशक्त नाटक प्रस्तुति है। आपने शिक्षित संताल लोगों की स्वार्थी जीवन शैली का खूबसूरती से चित्रित किया है, जो अतीत में समाज में कभी नहीं थी। विभिन्न सामाजिक स्थितियों की नाटकीय प्रस्तुति प्रभावी ढंग से की गई है। यह नाटक समकालीन सामाजिक मुद्दों के उत्कृष्ट चित्रण के लिए उल्लेखनीय है तथा अपने असाधारण चरित्र चित्रण, सजीव कथानक, सहज भाषा तथा वास्तविकता और कल्पना के बीच उत्कृष्ट संतुलन बनाए रखने के कारण आंखों के आंखों खोल देने वाला है। सोचित सावतारेण आंधम मानवी कृत संताली में लिखित भारतीय नाट्य साहित्य को महत्वपूर्ण योगदान मानी गई है। धन्यवाद। अवार्ड इन सिंधी गोes to हुंदराज बलवानी। Sundaraj Balwani is an eminent Sindhi writer. He was born on 9 January 1946. He holds Bachelors of Education, Masters of Arts, and doctorate degrees. Besides Sindhi, he knows Hindi and Gujarati. He has published more than 200 books in Sindhi, Hindi, and Gujarati. He is a recipient of Sahitya Akademi Bal Sahitya Puruskar, Sahitya Gaurav Award, Sahitya Sham Award, Meera Smriti Samman, Hindi Bhasha Samman, Soviet Land Nehru Award, Akhil Bharat Sindhi Boli and Sahitya Sabha International Award, वरिष्ठ साहित्यकार सम्मान, दादा सेवक भोजराज अवार्ड, भारतीय बाल शिक्षा परिषद अवार्ड, भारतीय बाल कल्याण संस्थान and Indo-Soviet Cultural Society among others. Purjo is a collection of 11 Sindhi short stories. The stories in the collection bring forth contemporary social evils and brilliantly depict the constant effort of human beings to achieve peace in a poetic society and subsequent exploitation. The central concern of the short stories is to portray humanism in a globalized world, the conflicts of ideologies influencing the human life and culture. The author has artistically and effectively used simple and lucid language which is easy for the readers to observe while preserving the literary gravity of the stories. As such, Urso is considered a significant contribution to the genre of Indian fiction in Sindhi. Thank you. The award in Tamil goes to A.R. Venkatachalapati.
E.R. Venkatachalapati, born on 30th June 1967, is a professor at the Madras Institute of Development Studies, Chennai. A historian by training, he is also a translator and editor, working in the interface of literature and history. He specializes in the social, cultural, and intellectual history of modern Tamil Nadu. Apart from his scholarly writings in English, Venkatachalapati has written, edited over 30 books in Tamil. His publications in English include Swadeshi Stream, Vivo Chidambaram Pillai, and the Battle Against the British Maritime Empire, The Brief History of a Very Big Book, Tirunelveli Eluchium Va Vu Chi Yum, 1908, The Making of the Tamil Encyclopedia, etc. He has taught at universities in Tirunelveli, Chennai, and Chicago, and was the ICCR Chair Professor in Indian Studies at the National University of Singapore. He is a recipient of the VKRV Rao Prize and the Mahakavi Bharati Award. He has received the Vilakku Pudumai Pittan Award in 2018 and EL Viruddu in 2021, both for lifetime contribution to Tamil. Tirunelveli Eluchian Vavu Siyum 1908 is a lively and gripping narrative of series of events which took place at the height of the Swadeshi movement on 13 March 1908, following the arrest of Vivo Chidambaram Pillai, a great nationalist and patriot. The people of Tirunelveli and Tuticorin rose up in protest. They attacked British government offices and burned European establishment. Following this, the police, under the leadership of the district magistrate, opened fire and killed many protesters. More than 100 protesters were convicted. In an act of collective retribution, a punitive police force was stationed. This protest found detailed mention in the infamous sedition Rowlatt Committee report. This book, based on hitherto unknown documents, describes in chiseled prose not only the events but also the causes and consequences of the protest. Vivid in its narrative style, the book is full of interesting information. As such, Tirunelveli Illuchium Vavu Chiyum 1908 is considered as an important contribution to the genre of non-fiction in Tamil. Thank you. Award in Telugu goes to Penugonda Lakshmi Narayana. Penugonda Lakshmi Narayana is an eminent Telugu writer and critic. He was born on 1st May 1954 at Palnadu district, Andhra Pradesh. He holds bachelor degree in arts and in law. Besides Telugu, he knows English. He is an advocate by profession. He has compiled, edited, and co-edited more than 100 books and also written more than 200 literary essays. He has been associated with the Progressive Writers Association since 1974 and is currently its president. He is a recipient of literary award from Poti Sriramulu Telugu University, Kavi Sandhya Pratibha Puraskaram, Guttikonda Subbarao Literary Service Award in 2024, Telugu Official Language Award by Andhra Pradesh State Government, and the Distinguished Literary Figure Lifetime Achievement Award. Deepika is a collection of 36 critical essays in Telugu. The essays cover topics of cultural renaissance movement, the necessity of cultural policy, and highlight the solidarity of the poets and writers of Andhra Pradesh during the Telangana armed struggle during the years 1947 to 1951. The essays in the collection are incisive, in depth, and showcase the critical acumen of the author and offer profound knowledge of and rare insights into social and literary culture. The language of the essays is simple, excellently relatable, and avoids jargon. As such, Deepika is considered as one of the most important contribution to the genre of Indian criticism in Telugu.
Thank you. The award in Urdu goes to Atikullah. Thank you. Atikullah is an eminent Urdu poet, critic, and dramatist, born on 2nd July 1940 at Ujjain in Madhya Pradesh. He holds a doctorate degree in Urdu literature from Marathwada Ambedkar University, Aurangabad. Retired as a professor from the Department of Urdu, University of Delhi. He knows English and Hindi besides Urdu. He has more than 25 publications to his credit. He is a recipient of several awards and honors such as Iqbal Samman, Pandit Dattatreya Urdu Academy, Delhi, and Uttar Pradesh Urdu Academy Award. Bain Ulumi Tankid is a collection of 23 essays, an interdisciplinary study of creative writing in Urdu. This work deals with analysis of an assessment of modern Urdu criticism, considered a significant contribution to Urdu literary criticism, particularly for its nuanced approach to interpreting literature. The work fulfills the demand of the present era of technological advancement. As such, Bain Ulumi Tankid is considered as an important contribution to the genre of Indian criticism in Urdu. Accept awards, and with grace, quietly return to our work, making the world a little better than it was before we came into it. But today, more specifically, belongs to these 23 great writers who've been selected as the greatest writers of the year 2024. I don't think any other country's Academy of Letters has this privilege of felicitating such a linguistically diverse group of writers among their citizens. This ceremony now symbolizes what the world needs most today, acknowledging diversity. And we lead by example.
Whatever identity we as Indians wish to address ourselves with, diversity is key to it. As Indians, we're proud to be culturally and religiously diverse. As writers, we celebrate our languages, the one we are born to inherit, the one we express ourselves in, the one we dream in, etc. And together they form the language we write in. As individual thinkers and artists, we celebrate our creativity nurtured by diverse psychological, familial, and cultural experiences. A singular identity is not enough to define who we are as writers. The world today knows that India is home to over 24 officially recognized languages and countless dialects. Each language has its unique script, grammar, and vocabulary, reflecting its speakers' distinct culture and history. From ancient Tamil Sangam texts and Sanskrit drama to contemporary novels, poems, and essays, we have given the world some of the most profound and beautiful works of literature. Storytelling is in our blood. The Sahitya Akademi, India's National Academy of Letters, has played a vital role in promoting and preserving this linguistic diversity. It is established in 1954. The Academy has worked tirelessly to promote Indian literature in all languages, including English, acknowledging that English is no longer a colonial language, but one of our own. Through its various programs and initiatives, the Academy has encouraged writers, translators, and publishers to produce high-quality literature of our time and place. And one very important contribution that the Sahitya Akademi has made has been promoting translations. And I hope that all 23 of these writers will have cross translations into 22 other languages. So that would make our country so much richer with all these translations. As we celebrate the diversity of Indian languages and literature, we must also acknowledge the challenges ahead. Our languages and cultures may be homogenized or marginalized in an increasingly globalized or capitalized world. Therefore, we must continue to support and promote our languages and literature, not just as a matter of inflated pride, but also as a means of preserving our unique identities and perspectives. In conclusion, I would say we are many, many voices gathered here today, and behind each voice, there are many, many expressions. And behind each expression, there are timeless and universal feelings, moods, and sentiments. Let us continue to celebrate and promote this diversity and remain committed to the value of inclusivity, tolerance, and cultural exchange that have always defined us as a nation. Thank you. Thank you so much, sir, for a very brief but so much, and also for your thank you for your kind words about the academy. Now I request Vice President of Sahitya Academy, Professor Kumar Sharmaji, to address this August gathering. And after that, we have a flute recital by Rakesh Chaurashia. So kindly remain in your seats and don't go, because we have to encourage the artists who are performing. And also we have a group photograph after this madam's address. Professor Kumar Sharmaji. आज के समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री महेश ददानी जी, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री माधव कौशिक जी,
साहित्य अकादमी के सचिव श्री के श्रीनिवास राव जी और इस मंच पर आज सम्मानित हुए 24 भाषाओं के हमारे रचनाकार, इस सभागार में उपस्थित साहित्य अकादमी की सामान्य परिषद और एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सदस्य, दिल्ली से यहाँ पर उपस्थित साहित्य प्रेमी, साहित्यकार और सम्मानित हुए साहित्यकारों के परिवार से जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। अपनी बात मैं शुरू करूं। मैं आज सम्मानित हुए रचनाकारों का पुनः अभिनंदन करती हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई। ये जो महीना है वो अपने रूप रंग में ही उत्सव धर्मी है। वसंत और फागुन के बीच का समय, और साहित्य अकादमी कई दिनों तक चलने वाले, 6 दिनों तक चलने वाले साहित्य उत्सव का आयोजन करती है। देखा जाए तो साहित्य भी अपने आप में एक उत्सव है, वो भी वसंत का ही पर्याय है। वो सृजन का उत्सव है, वो मानुष भाव को जगाने का उत्सव है, वो जीवन के राग और विराग के बीच आदमियत को आवाज देने का उत्सव है, और भारत के आंचल में बसे रागोत्सव में डूब जाने का उत्सव है। और साहित्य अकादमी के साहित्य उत्सव के बीच में ये साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी के पुरस्कार अर्पण का ये समारोह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है, जैसा कि अभी हमारे मुख्य अतिथि ने जो भाषण दिया, उनके भाषण का जो बिल्कुल कहना चाहिए मूल था, वो हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता, भाषाई विविधता का सौंदर्य था। और आज इस मंच पर, ये मंच अपनी पूरी भाषाई विविधता और सांस्कृतिक सौंदर्य के साथ साहित्य उत्सव में अपनी उत्सव प्रियता और उत्सव धर्मिता के कई रंग बिखेर रहा है, वो उसका साक्ष्य यहाँ प्रस्तुत कर रहा है। बहुत सारी बातें यहाँ कही जा चुकी हैं, उन्हीं से जोड़ करके कुछ और बातें रखना चाहूंगी। जब के श्रीनिवास राव जी प्रस्तावना या कहिए स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो साहित्यकार होता है वो जीवन को देखता है, यथार्थ को प्रस्तुत करता है, और उस यथार्थ की कई तस्वीरों को वो उभारता है। उन तस्वीरों में उसके वाह्य जीवन की तस्वीर भी होती है, समाज की तस्वीर होती है, उसके दिल की तस्वीर होती है। वो अपनी मनोवैज्ञानिक परतों के बीच से भी सत्य को उद्घाटित करता है। थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगी कि बात हमेशा कही जाती है कि साहित्य जीवन का दर्पण है, वो जीवन का एक्सरे उतारता है, वो जीवन का आईना होता है। लेकिन साहित्य केवल केवल जीवन का आईना नहीं होता, केवल जीवन का दर्पण नहीं होता, वो जीवन का फोटोजेनिक चित्रांकन भर नहीं होता है, बल्कि वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक पगडंडी तैयार करता है। वो संकट की घड़ी में ऊर्जा के स्रोतों की तलाश भी बनता है, और ये तलाश साहित्य के माध्यम से निरंतर चलती रहती है। साहित्य को या साहित्यकारों को सम्मानित क्यों किया जाना चाहिए? कई बार इस तरह की बात उठती रहती है कि पुरस्कार बंद होने चाहिए या क्यों दिए जाते हैं, क्या जरूरत है साहित्यकार को सम्मानित करने की? मित्रों, साहित्यकार का सम्मान बहुत बड़ी बात है। उसको सम्मानित इसलिए करना चाहिए कि वो साधक होता है। साहित्य उसके लिए एक साधना है, और वो साधना कितनी दूर तक जाती है, किसी भारतीय चिंतक ने कहा है कि जब कलाकार अपने रचनात्मक फलक पर आता है, रचना की प्रक्रिया से गुजरता है या कला की प्रक्रिया से गुजरता है, तो उसकी आनुष्ठानिक मृत्यु नितांत आवश्यक होती है।
यानी कि सबसे पहले साहित्य के फलक पर जब आता है तो सबसे पहले वो आत्मविसर्जन करता है, अपने को भूल जाता है, फिर समाज में डुबकी लगाता है, जिस चरित्र को ढूंढता है उसके भीतर उतरता है, फिर वो कुछ रचता है। और वो कैसा रचता है, किस तरह से वो संयोजन करता है, अभी जो आपको भी मिला होगा, जो प्रशस्ति पत्र जिनको पुरस्कार मिले हैं, उनका मैं पढ़ रही थी, उनका परिचय भी दिया गया है। किसी रचनाकार के लिए इसमें लिखा कि उनकी जो कविता है एक साथ विज्ञान को, राजनीति को, इतिहास को जोड़ती है। वो कविता अतीत और वर्तमान को जोड़ करके अद्वितीय कथा कहती है। हर रचनाकार ऐसा करता है, इसलिए वो बड़ा है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि संस्कृति की बात आप कर रहे थे, और विविध भारतीय भाषाओं के जितने रचनाकार यहाँ बैठे हैं, आप देखिए कि आप अपने अपने प्रांत का परिधान भी पहने हुए हैं, और उनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। उनकी भाषा अलग है, उनका खान पान अलग हो सकता है, उनके रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, बहुत सारा वैविध्य है। लेकिन खूबी क्या है? खूबी ये है कि जो विविधता है वो परिधि पर है, लेकिन केंद्र तो एक ही है। और वो केंद्र क्या है? वो सबका सांस्कृतिक बोध एक ही है। एक अखंड समग्र चेतना की संवाहिका भारतीय संस्कृति की धारा सारे भारतीय साहित्य में प्रवाहित होती चली आई है, और हमारे रचनाकार उसी से जुड़े हैं। ये रचनाकार जो सम्मानित हुए हैं, उनके साहित्य में अगर आप देखें और इसको पढ़ें बुकलेट को, तो आप पाएंगे कि उन सब के साहित्य में जीवन के बहुत सारे रंग बिखरे हुए हैं। कहीं आध्यात्मिकता का रंग है, कहीं हमारे भारत के ऋतुओं का, उनके मौसम का रंग है, कहीं व्यक्ति के भीतर जो भावनाओं का उतार चढ़ाव है उसके रंग है, कहीं सुख दुख के रंग है, कहीं जिजीविषा के रंग है। बहुत सारे रंग बिखेरता है साहित्यकार। और सबसे बड़ी बात क्या होती कि तमाम रंगों के बीच जो एक साहित्यकार का सबसे प्रिय रंग होना चाहिए, और होता भी है, वो है मनुष्यता का रंग। एक सार्वभौमिक रचनाकार मनुष्यता के लिए जीता है, मनुष्यता के लिए मरता है, और अपने साहित्य के फलक पर संयोजन का धर्म निभाता है। वो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ता है, व्यक्ति को समाज से जोड़ता है, व्यक्ति को देश से जोड़ता है। वो सत्य शिवम सौंदर्य के प्रतिमानों से गुजरता है। इसीलिए किसी ने कहा है कि कला खाली आकाश में प्रकाश के लिए जमीन तैयार करना है। कला खाली आकाश में प्रकाश के लिए जमीन तैयार करना है। 7 रंगों की परिधि के भीतर उस रोशनी की तलाश है जहां रोशनियां अपने सत्य को, सौंदर्य के नए शिव रूपों में जन्म दे सके। और मुझे लगता है सब यही होना चाहिए। जो बात मैं कहना चाहती थी वो यहाँ समाप्त करती हूँ, क्योंकि सभी ने संक्षिप्त वक्तव्य दिए हैं, अपने को और ज्यादा क्योंकि समय हो रहा है। लेकिन एक जिम्मेदारी साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष के नाते मेरे ऊपर होती है कि मैं आज का ये जो आयोजन है, जिसको आप सब सफल मानेंगे, उसकी सफलता के पीछे जिन सब का भी हाथ है, जिनका सहयोग है, उनका धन्यवाद किया जाए। उत्सव चाहे पारिवारिक उत्सव हो, मांगलिक उत्सव हो, समाज का कोई उत्सव हो, साहित्य का भी कोई उत्सव हो, तो उत्सव के लिए पुकार मचानी पड़ती है। उत्सव के लिए लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है। बहुत बहुत आभार। हमारे इन
24 भाषाओं के रचनाकार जो सम्मानित हुए वो दूर दूर से यहाँ आए, उन्होंने इस पुरस्कार को ग्रहण किया, उन सब का भी आभार। और मंच की शोभा अगर नहीं होती तो भी कार्यक्रम सफल नहीं होता। इस मंच को शोभा दी हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री महेश दत्तानी जी ने अपना वक्तव्य दिया। बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य था, बहुत सारे सूत्र थे जिसको हम लेके जाएंगे। आपका भी बहुत बहुत आभार। हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री माधव कौशिक जी का बहुत आभार कि उन्होंने बहुत हमेशा की तरह एक प्रेरक वक्तव्य दिया। साहित्य अकादमी के सचिव श्री के श्रीनिवास राव जी, जब भी कोई आयोजन होता है महीनों पहले उसकी तैयारी के लिए किस तरह से जुटते हैं, तभी कोई कार्यक्रम सफल होता है। उनका भी बहुत बहुत आभार। इस कार्यक्रम के लिए बहुत सारे हमारे मीडिया कर्मी यहाँ पर उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम की गूंज को वो अपने अपने मीडिया संस्थानों के माध्यम से दूर दूर तक बिखेरेंगे। उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य अकादमी के हमारे और अधिकारी कर्मचारीगण जो कि इससे जुड़े और अपना उनका सहयोग रहा, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपनी बात को यही विराम देती हूँ। आप सबका पुनः अभिनंदन, नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद. I also thank the President, Vice President, and the Chief Guest of this evening, Sri Mahesh Dattani ji, and all the literary connoisseurs of Delhi and NCR area, the General Council members and Executive Board members who came all the way from different parts of the country, and all the award winners and their proud family members who made this evening ceremony a grand success. But we have a second part of this ceremony that is, as I already mentioned, Rakesh Chaurasia's flute recital. So kindly be seated. Tomorrow, all these award winners will speak about their journey of writing in a writer's meet that is at Narmada Auditorium in the Ravindra Bhavan complex. We have given a reversed names to all the 6 auditoriums in the Ravindra Bhavan in Sahitya. So kindly be present in that writers meet as well and make our festival a grand success. This is my request to all of you. So now we will have a group photograph. Thank you and good night. But still kindly be seated. We have a wonderful flute recital by Rakesh Chaurasia ji.